Hello, guys. Welcome back to the video lecture series for white collar crimes. In this video, we'll be moving on and covering the other major topics which are prescribed in our syllabus. इस वीडियो में हम लोग ये रेलेवेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. सो दिस जो पहला टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम्स फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड क्रेसी. दिस इज इन रिलेशन टू द प्रीवियस वीडियो. उसके डेवलप ये इस वीडियो में मैंने क्यों रखा है क्योंकि अभी इस वीडियो के लिए हम लोगों को एक रैशनल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कनेक्शन समझने के लिए कि हाउ द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाइट कॉलर क्राइम्स रन्स इन वेरियस कैटेगरीज. क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स के साथ डील करने वाले हैं. टैक्स इवेजन, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स, हेल्थ केयर फ्रॉड्स, मिस ब्रांडिंग एडल्ट्रेशन, एजुकेशनल फ्रॉड्स and also some relevant case laws. So let me just tell you this here कि इस पूरे टॉपिक में जो यूनिट 2 है इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है दैट इज नेस्ले इंडिया लिमिटेड वर्सेस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. दिस केस इज एक्चुअली द मैगी का जो स्कैंडल हुआ था पूरा. हाउ मैगी वाज बैंड फॉर एन ईयर एंड it was completely out of the market. People were not consuming it. There were a lot of speculation and allegations upon Maggie, but later on everything was clarified. So this is that case. अगर आपको उसकी प्रायर नॉलेज है तो आप ऐसे समझ जाओगे कि इस वीडियो में आपको क्या-क्या चीज़ें इस केस में आप क्या-क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो. Other than that, there's this Hassan Ali case. It is one of the most landmark cases of tax evasion. ये अभी भी चल रहा है, अभी भी रिज़ॉल्व नहीं हुआ है. उसके अलावा ये जो 2 केसेज़ हैं लास्ट में जो मैंने मेंशन करे, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी, यूएस Ranbaxy, these are just merely for reference purposes. You can read upon it in detail if you wish to. I'll be giving a basic idea of the other relevant cases which are directly related to the topics in discussion. So सबसे पहले rationalization of white collar crimes for triangle by Donald Cressy. Let's read this once with me quickly. The fraud triangle framework popularized by Donald Cressy and W. Steve has been used to explain financial crimes since the 1940s. It's a very old theory. It's basically been used to contextualize fraud. के पीछे की साइकोलॉजी कैसे चलती है, एक रिलेशन नेक्सस क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, क्यों क्राइम्स होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम स्पेसिफिकली. So the theory states that workplace financial crimes and fraud occurs when an offender has sufficient opportunity, pressure, and rationalization to commit the crime. सो एज यू मस्ट अंडरस्टैंड इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने रेफरेंस के लिए लगाया है. आप ये अपने एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हो. दिस विल एक्चुअली लीव एन इम्प्रेशन अपॉन द एग्जामिनर जो भी आपके पेपर चेक करेंगे कि यू हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड यू कैन एक्चुअली ड्रॉ इट out for the other person. As you must understand कि visual images leave a lot more impact than written words. So this can really fetch you good marks. तो जैसा हम लोग ने, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फ्रॉड करने वाले लोगों के पास, व्हाइट कॉलर क्राइम फ्रॉड करने वाले लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है. दैट अपॉर्चुनिटी कम्स आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी they hold out of the position they are at, the educational or expertise or knowledge they hold out of the occupation, out of the position they hold or whatever they have developed. Second is pressure. What sort of pressure? Pressure that lures them to want more in life. टेम्प्ट वो मॉनिटरी हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, ज़्यादातर मॉनिटरी होता है. व्हाइट कॉलर क्राइम्स आर मोस्टली डन फॉर people who are lured by more and more money and rationalizing to commit those crimes. How do we rationalize these crimes? Crimes can once and for all, अगर if I throw it at you and say कि crime करना rationalize भी हो सकता है, you'll think कि how, मतलब how can someone even do that? But अगर आपको previous video में याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे एक इंसान, every human is a social being. When they get in contact with someone else who is practicing something similar and making a very good living out of it, you in a way feel normalize हो जाते हो आप उस गलत एस्पेक्ट को लेकर भी. So that is how you try to rationalize your bad deeds or the other person's bad deeds. Moving on, the fraud triangle has been empirically applied to an array of criminal behaviors and specific criminal crimes and offenders internationally to determine if all three elements are necessary for the crimes to occur. ये एक बेसिकली एम्पिरिकल थ्योरी है. एम्पिरिकल मतलब ओरिजिनली डिराइव्ड थ्योरी है. इट्स एक्चुअली बेस्ड अपॉन अ वेरी वेरी रिगरस रिसर्च दैट वाज कंडक्टेड ओवर अ वेरी वेरी ह्यूज चंक ऑफ people by very niche experts in psychology and crimes as a subject over a very long period of time, and then they came up with this theory. और तीन
सब क्या 3 डिविजन्स में इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज़ बेसिकली सॉर्ट ऑफ अ चेकलिस्ट कि क्या ये चीज़ें प्रेज़ेंट रही हैं। सो इट्स अप्लाइड इंटरनेशनली, इट्स यूज्ड टू डिटरमाइन the necessary elements of a crime whenever it is committed, specifically white collar crimes. It's very interesting. You can definitely read more upon it. But अगर आप ये सब mention करोगे तो more or less it will suffice everything. Moving on, tax evasion. This is the first concept. It is very very important. टैक्स इवेजन से आपको मतलब पता होगा टैक्स की चोरी करना। गवर्नमेंट, लेट्स रीड इट टुगेदर। Government allows various avenues in its tax structure through which an individual or an entity can save on their tax liability, purposefully trying to show income lower than actual to reduce the tax liability is a crime to the state and their people. Tax evasion is a crime as per every state law, including India, and can attract severe penalties. Tax को कम करके दिखाना, इनकम को कम कम करके दिखाना, it's also a crime. Somewhere or the other, you are just basically manipulating the financial records or the authorities or just playing your way around, avoiding to pay tax. So tax evade करना और tax avoid करना, there's a very slight difference. You must understand. So some of the most common methods in practice of tax evaders is non-payment of dues. Second is inaccurate financial statements, fake documents, fake false returns, smuggling, bribing government officials, tax havens, offshore wealth. आप समझ रहे होंगे टैक्स नहीं पे करना सबसे बड़ा सबसे डायरेक्टली रिलेटेड टैक्स इवेजन का मेथड है। उसके बाद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट कर देना, उनको फॉर्ज कर देना, इस तरीके से कि लगे कि इनकम ही कम हुई थी, तो टैक्स भी हम कम ही पे करेंगे। फॉल्स रिटर्न्स सबमिट करना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, आपने देखा होगा कि आपकी सोसाइटी में भी अ लॉट ऑफ पीपल जनरली टॉक अबाउट हाउ दे आर इवेडिंग टैक्सेस। Smuggling is basically when you bring off and physical object from one place to another to completely remove its source of origin. So it looks like that it was never yours. It never belonged to you. So that's smuggling. Bribing government officials, जो लोग जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, उनको पैसे खिला दिया आपने कि uh, then in a way to maybe reduce your tax or maybe sometimes even not paid at all. ये तो बहुत ही कॉमन मेथड है। टैक्स हेवन्स, ऑफशोर वेल्थ, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों के स्विस बैंक्स में अकाउंट होते हैं, जिनके ऊपर इंडियन अथॉरिटीज़ का जुरिसडिक्शन नहीं होता। बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट लोग बाहर कर देते हैं, जो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी नज़रों में ही नहीं आ पाता है। तो दैट इज़ हाउ यू बेसिकली क्रिएट अ पूल फॉर योरसेल्फ, क्रिएट अ सेफ्टी नेट आउट ऑफ द आईज़ ऑफ द लॉ somewhere else, mostly offshore. Moving on, the Income Tax Act in India identifies penalties for taxpayers for various acts of omission, willful neglect, and purposeful evasion of taxes in any financial year. Below are some of the examples and relevant sections of the identified penalties. यहाँ पर ये 3 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओमिशन, अवॉइड कर देना, विलफुल नेग्लेक्ट कि आप जानकर अवॉइड कर रहे हो, पर्पसफुली, इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हो, इवेजन ऑफ टैक्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर, एवरीथिंग क्वालिफाइज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज टैक्स इवेजन। हियर आर सम ऑफ द रेलेवेंट सेक्शंस जहाँ पर पेनल्टीज डिफाइन करी गई हैं। यू कैन टेक अ क्विक लुक एट इट। सेक्शन 270 ए में बताया गया है कि इफ अ टैक्स पेयर ट्राइज टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द रिपोर्टेबल इनकम क्या होता है? इनकम जिस पे आपको टैक्स पे करना है। The penalty can go up to 200% of the tax payable on the unreported income. फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम मुझे 5,000 रुपये पे टैक्स देना है और मैंने दिखाया कि मेरे पास 2,000 रुपये की इनकम है, तो बाकी के जो 3,000 रुपये जो मैंने छुपाई है ना, उसके 200% जितना टैक्स लगना चाहिए था, उसके 200% मल्टीप्लाई करके अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड राइट? सिंपल मैथमेटिक्स। 270A imposes a penalty of 25,000 to a taxpayer in case of failure to maintain the books of account as per the requirements of section 44A, clause A. सो जैसा मैंने आपको बताया, कई बार बुक्स को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, बुक्स मेंटेन ही नहीं करते हैं लोग सीरियसली। सो दैट इज़ समवेयर यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द कॉर्पोरेट्स, ऑल द एंटिटीज़, ऑल द बिज़नेसमैन नीड टू मेंटेन बुक्स। ये गाइडलाइंस इसीलिए पुल करी गई हैं, इसीलिए इम्प्लीमेंट करी गई हैं टू मेंटेन अ स्ट्रिक्टर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग टू बेसिकली प्रिजर्व द सैंक्टिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, यू नो। Penalty can be imposed by an assessing officer for default in payments of taxes from a taxpayer as per section 220 clause 1, 220 clause 221 clause 1 of the Income Tax Act. So of assessing officer के ऊपर पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो आपके ऊपर जो भी आपने टैक्स इवेजन करा है उसके हिसाब से
पेनल्टीज पुल कर सके. Moving on, just give me a quick second. टैक्स इवेजन का जो सबसे क्लासिक लैंडमार्क केस है, इट्स रनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हसन अली का केस है. ये जन्मों पुराना केस है ये, और अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाया. हसन अली, इसकी बैकग्राउंड स्टोरी मैं आपको इसमें सब कुछ मोर और लेस मेंशन्ड है. दिस यू विल मे बी विल नॉट फाइंड इट इन अ केस मैट, बट यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस इन योर एग्जाम for the examiner to understand ki, you have a very clear understanding of tax evasion as a subject, because this really qualifies as something that every person who's truly interested in the subject should know and must be able to present. So Hassan Ali Khan is an alleged money launderer and a hawala trader, accused of stashing multi-billion US dollars into Swiss account, tax haven जैसे मैंने आपको भी बताया, thereby evading taxes from Indian tax authorities of literally $910 million का tax evasion इसने करा था. Hassan was first arrested in March 2011 when Supreme Court intervened and asked the government and the enforcement directorate on the reason for not acting against Hassan despite sufficient evidence against him on allegations under Hawala transactions from 2007 and onwards. सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन करा कि आपके पास हसन के अगेंस्ट सारी की सारी एविडेंसेस है, फिर भी आप क्यों नहीं एक्ट कर रहे हो. तब 2007 के बाद 2011 में the Enforcement Directorate and the Income Tax authorities took the first step and arrested him. Enforcement Directorate charged Hassan under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 with allegations of helping an arms dealer to launder US dollars 300 million generated through arms dealing through his UBS account. UBS is basically a foreign account outside of the scope of Indian banking regulatory authorities. Hassan denied all charges on him, and a legal battle with the government of India and the Enforcement Directorate ensued. The Enforcement Directorate has cited rupees 34,000 crore as the tax due from Hassan from his income. 2001 साल में 34,000 करोड़ का टैक्स जो बचा है हसन का, जो टैक्स इवेड हुआ है, ये कोट हुआ है. तो यू कैन इमेजिन द scale at which he must be operating all this. In February 2016, Income Tax Appellate Tribunal has brought down the tax liability of Hassan from 34,000 crores to 3 crores now. Just imagine what is really going on. No one knows how many politicians and other supreme authorities are involved in it. No one knows. Uh, so ऐसे लेवल पे ऑपरेट करने वाला इंसान will have a very strong and very robust safeguards of lawyers, financial experts, strategists to just protect him at every cost. So you can imagine what is going on. The IT department has failed to substantiate its claim on Hassan's income and thus the tax liabilities. The resentment notice have been sent to the assessing officer. Following this, Hassan have given granted bail 14 upon 14th attempt, while Enforcement Directorate continues to struggle to prove the allegations levied against Hassan in the charge sheet. Hassan's lawyer has thus claimed that he have been false implicated into the case and had suffered due to this. So there's still a lot of speculation going around this, and we really never know what will the final judgment of this case be, because Hassan here seems to be a very very powerful man. So moving on, the second topic in your case, Matt, is corporate frauds. Corporate frauds के भी हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ केसेस हैं. कॉर्पोरेट फ्रॉड्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर मोर सिस्टमैटिक इन नेचर. दे आर डन नॉट जस्ट बाय सिंगल इंडिविजुअल. देयर इज लिटरली अ ऑर्गेनाइजेशनल setup, a framework, a hierarchy that's been followed in these type of frauds. So let's read it together. Corporate frauds means illegal practices undertaken by a corporate or an individual person to make a tremendous profit and to have an edge over another. In a very simple and plain language, edge over another, to be better than the other person in every aspect. Corporate frauds result in huge losses of public funds, which they have entrusted to the company for better functioning. बेसिकली कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है, तो पब्लिक का पैसा कई बार इन्वॉल्व होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा केस है जिसमें एल आई सी, आगे उसके बारे में आप पढ़ोगे भी, कि एल आई सी के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था. और एल आई सी में कौन पैसा लगाता है? जनरल पब्लिक. As simple as that. So the types of corporate frauds basically mostly include financial misappropriation of payments, fudging the bank of books of accounts, misleading the investors to invest by rapidly increasing the share prices, basically just siphoning off money, just manipulating the public, vulnerable public, who do not have the financial expertise to understand the economics that's been running around. So they just simply fall into the trap. Misappropriation of assets, embezzling receipts, stealing physical assets, intellectual property rights, dummy payments, using an entity assets for personal use.
किसी और की चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने लिए कर रहे हो और अपनी चीज़ों का इस्तेमाल आप गलत चीज़ों के लिए कर रहे हो। You as simple as that. Corruption, making or receiving improper payments, offering bribes to public officials or private officials, abetting, taking political support to commit frauds. As you must, as मैंने आपको बताया कि हसन के केस में you really never know कि कैसे उसकी penalty 34,000 crore से 3 crore पे आ गई है. So there's a lot that's running behind corrupting officials, political pressure, financial rigging the system. It can be anything. So moving on, जो इसका जो legislative statute है, that is the Companies Act 2013. It basically deals with provisions relating to corporate frauds. According to Section 447 of the Companies Act, this section is very very important. You please remember this very clearly. ये cases में भी बहुत बार quote होगा. Any person who is found guilty of fraud shall be punished with either imprisonment or fine. As clear as that. Few of the biggest corporate financial frauds in India are mentioned here within. हरिदास मुंद्रा स्कैम, बेसिकली इसमें LIC के शेयर्स का की रिगिंग हो गई थी. तो LIC में इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया था. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड द मोस्ट क्लासिक स्कैम्स व्हिच इज आउट देयर. सत्यम स्कैम में रियल एस्टेट, पूरे कंट्री का रियल एस्टेट हिल गया था, इतना बड़ा स्कैम था ये. यू कैन डेफिनेटली रीड मोर अपॉन इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस फॉर रेफरेंस. यू कैन ऑलवेज फ्लैश इट आउट अ लिटिल बिट व्हाइल यू आर राइटिंग इट इन द एग्जाम. It will obviously leave a very good impression upon the examiner. Moving on, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स के जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, मैंने माइंड छोटे-छोटे वाले मेंशन करे. विल नॉट गेट इनटू मच ऑफ द डिटेल बिकॉज़ दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन योर केस मैट, बट इफ दिस कम्स अप यू शुड डेफिनिटली हैव एन आइडिया. विमल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि डिसीट, हाउ द आइडिया ऑफ डिसीट इज नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ फ्रॉड, बट इट did not exhaust it. The expression defraud involves two elements, namely deceit and injury to the person deceived. Injury is something other than economic loss, that is deprivation of property, whether immovable or movable, of money, and it will include any harm whatever caused to any person in body, mind, reputation or such other. डिफ्रॉड की डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत वाइड कर दी थी विमल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी के कोर्ट में, कि सिर्फ इकोनॉमिकल और सिर्फ फाइनेंशियल लॉस होना जरूरी नहीं है. रेपुटेशन पे लॉस, मेंटली स्ट्रगल हो जाता है बहुत लोगों का, बॉडी बॉडली इश्यूज हो जाते हैं आउट ऑफ ऑल दीज लॉसेस. एवरीथिंग विल बी covered as the meaning of loss which comes out of the deceit with the other person, which the other person has inflicted upon uh, the sufferer. Benefit or advantage to the deceiver will almost cause a loss or determine the deceived, even in those rare cases when there is a benefit or advantage to the deceived but no corresponding loss to the deceived, the second condition is satisfied. You please read this very very carefully. Even if in the rare cases where the benefit or advantage to the deceived but no corresponding loss to the deceived, the second condition is satisfied. भले ही कोई एडवांटेज हुआ हो, नहीं हुआ हो, लेकिन वो बंदा डिसीव हुआ है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. दिस विल क्वालिफाई एज बीइंग डिफ्रॉडेड. आइदर ऑफ दोज और बोथ ऑफ देम, they individually will qualify as a fraud. Vikas Agarwal versus Serious Fraud Investigation Office. So this organization, you must remember, uh, this is one of the most prime investigative agencies that has been established under the statutory, as a statutory body in India for investigating into the biggest crimes, financial crimes of the country. The petition was summoned for the charge of criminal conspiracy under Section 447 of the Companies Act. Section 447 मैंने आपको अभी क्या बताया? Any person who is found guilty of fraud shall be punished within relating to corporate frauds. Uh, an unsecured loan was also advanced to it by trust. माइनिंग एक्टिविटी के लिए एक अनसिक्योर्ड लोन, मतलब कोई मॉर्गेज नहीं हुआ था उसके अगेंस्ट, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट in this case observed that the definition of fraud provided in the section 447 of the Companies Act 2013 makes it clear that the instance and also to the other person who have in any manner in commission of the offense to gain undue advantage, everyone will be included liable. Everyone who's included in the entire transaction of the fraud will be held liable. Everyone who is generating some undue advantage out of the fraud will be held liable. यू अंडरस्टूड राइट. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे फ्रॉड की डेफिनेशन वाइड कर दी है और यहाँ पर लाइबिलिटी कैसे वाइड हो जाती है. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस केस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वर्सेज राहुल मोदी. दिस इज a suggested reading. If you write upon it, well and good. If you don't, I think these two cases should do just right for you to fetch really good marks in the exam. Uh, all the best. Thank you for watching. Moving on in this video, we'll be covering the latter half
uh, latter half of the things that were supposed to be covered in the next video. Thank you.